Can you tell us what are your thoughts right after the fight? How do you feel right now to be in the finals of the One Atomic Grand Prix? Yeah, I feel amazing, and one more. Now I'm final two, and now I close to my goal. So yeah, I feel amazing. Did your game plan change with the opponent switch? No, I not change my plan because last moment change my opponent. So my game plan is same. So it does not matter who is my opponent. I prepare so long time, hard work. So it's. No change. My plan same. Game plan is same. In round one, we actually saw quite a brutal knee by Jenelyn Olsim. How badly were you hurt? Because you seemed a bit shocked up. Actually, I don't feel his her name, but I give more pressure and give my technique, what is my strength, what is my technique, what is my game plan. So my focus on this, and I do this. Yeah, we saw Jenelyn Olsim, attempt a few triangle chokes, and the one at the end looked really close. Were any of those chokes really tough for you? How did you handle that? I don't feel she try armbar and neck choke, but I not feel so hard and not feel like I feel like I think I can escape not easily, but I can escape and do my thing. So yeah, see many times try. Were you surprised with what Jenelyn Olsim have to offer? She was a really tough opponent as well. Were you surprised at all with anything she did in the circle? No, I'm not surprised. I know she is very good, and his defense also very good. So I'm not surprised. I prepared for and I follow my game plan. So I know before I know she is tough opponent, and she is in semi-final. So yeah, she's good. So I'm ready, and I am ready to challenge this challenge. So you are in the final now. We saw Stamp Fairtex beat Julie earlier as well. What do you think about that fight? Because we saw you circle side watching it. Yeah, I watch her fight very closely. So I know what in final what I do. I know, and I do my hard work, and nobody can bring belt on my shoulder. Yeah, so yeah, and in final I prove all the words why I deserve Grand Prix, and I am the best in the atomweight category. You stared down against Stamp Fairtex earlier. Did you get a feel of Stamp? Do you feel that she's terrified of you, or what was that feeling when you were looking straight into Stamp Fairtex face for the first time in the circle? रितु वो बोल रही है अभी आप सर्कल में आप स्टैम्प के साथ फेस टू फेस आई हो ना, स्टेयर डाउन किया ना उनको, तो उनकी आंखों में देखकर आपको कैसे लगा? क्या आपको लगा कि वो आपसे अभी भी डरी हुई है कि क्या फील आया स्टैम्प को देखकर आंखों में? बिल्कुल मुझे बिल्कुल डरी है, क्योंकि वो अब मुझे कम आंकने की बिल्कुल भी गलती नहीं करेगी, और बिल्कुल वो मेरे से स्केयर है, और मेरे रेसलिंग उसने देखी होगी बहुत क्लोज से, लेकिन यही कहूंगी कि मैं और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा खतरनाक आने वाली हूँ, तो don't underestimate. She says that yes, definitely she thinks Stamp is petrified of her because she's seen Ritu's outstanding wrestling skills, and she will not mistake underestimating Ritu again. And Ritu says that nobody should try and underestimate her, because of all that you've seen, Ritu is going to be even more dangerous, and she's going to unleash herself on her next opponent during her next fight, during her next match. When she heard the decision, being announced against an earlier, was she nervous, or does she feel that she already know the results that she's
she has got it in her bag. ऋतु वो बोल रही है कि जब डिसीजन आपके लिए लिया गया ना, जो फाइनल डिसीजन था, कि आप नर्वस थी कि आपको पता था कि आपने ये कर दिया है अपने लिए, आपको पता था कि आप ये ले गई हो? बिल्कुल मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने जो बी के टाइम पे जो गलती की थी और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और वो मैंने इस मैच मतलब इस फाइट में बिल्कुल, वो चाहे मैच जज के हाथों में गया लेकिन मैंने वो गलती नहीं की जो मैंने अपने बी के साथ जो मैच था उसमें की थी। तो मैंने कंटिन्यू पंचेस कंटिन्यू स्कोर कर रही थी और बिल्कुल मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये मैच मेरे हाथ में होने वाला है। She says that she's learned a lot during the fight that she had with B. She's realized that it's best if she makes it a clear decision and she doesn't leave the decision to the judges. So she continued fighting that way, and she kept striking. She kept blowing punches at Jenelyn, and she was confident that she had done a good job because she kept scoring round by round. Like at this point in time, how confident is she in defeating Stamp Fairtex in the finals? रितु कितनी कॉन्फिडेंट हो स्टैम्प को हराने के लिए फाइनल में आज के मैच को लेकर इस टाइम पर? बिल्कुल मेरे लिए एक मतलब बहुत ही चैलेंज है ये, और मैं बिल्कुल इसके लिए हार्ड वर्क करूंगी और कैसे भी करके किसी भी तरह करके मैं बिल्कुल ये दिखाने वाली हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, और मैं बिल्कुल ये दिखाऊंगी फाइनल में कि आई एम द बेस्ट इन दिस ऑटोमेट कैटेगरी। She says definitely it's going to be challenging for her, but she's ready. She's got her game face on, and she's going to prove to everyone that she deserves to be here, and she's the best in the atomweight category, and she will do all that it takes for her to defeat Stamp. Sounds good. Does she have any message for the Indian fans? बिल्कुल मैं मेरे जितने भी इंडियंस फैन हैं और ऑल द वर्ल्ड हैं, मैं उन सभी को बस यही कहूंगी कि जिस तरह से आप लोगों का मतलब आप लोगों ने अपने प्यार और अपने सपोर्ट से मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, तो आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। मैं बहुत जल्दी इंडिया के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो बेल्ट है वो लेके आऊंगी। तो keep supporting me, keep continuous support and love. Okay, so Tammy, you would have got the latter half. Yes, and she says that definitely the fans' love and support has always kept her going. She's extremely grateful, and she extends her gratitude towards them. She says that she's soon going to be a shining example for the rest of the nations, for the rest of the world. She's going to make India proud, and definitely she's going to get the belt back home. Can you tell us how you feel looking back at the fight right now? How do you feel looking back at the fight right now with Jenelyn Olsim? रितु वो बोल रही है आप अभी फाइट वापस आप देखोगी, अभी जेनलिन के साथ जो फाइट हुआ है उसके बारे में आप सोचोगे और उसको वापस जाके देखोगी, तो आपको क्या लगता है उस पे आप क्या बोलना चाहोगी? कैसे था? एनालाइज करना होगा तो अच्छा था, बुरा था, क्या किया आपने? बिल्कुल मैं जरूर देखूंगी, और मैं देखूंगी कि मतलब कहाँ मैंने गलती की है जो मैं इम्प्रूव कर सकूं अपने आप को, कहाँ मेरे को इम्प्रूव करने की जरूरत है और किस चीज पे मुझे फोकस करने की जरूरत है। तो बिल्कुल मैं जरूर देखूंगी अपना मैच। और अभी इस टाइम पे क्या लग रहा है आपको मैच को लेकर? जो जेनलिन के साथ मैच हो गया है उसको लेकर आपको अभी क्या लग रहा है? बिल्कुल ये काफी क्लोज मैच था, और बहुत ही मतलब मैं ये कहूंगी कि टफ जो भी ओपोनेंट थी ओशलिन वो बहुत टफ थी, और बिल्कुल और मैंने मतलब दिखा वो बोल रही थी कि मैंने बी को बीट किया तो मैं रितु को इजीली से बीट कर दूंगी, तो शायद वो अब सोचेगी बिल्कुल मैच के बाद कि रितु को हराना इतना आसान नहीं है। She says that it was a tough one. Definitely it was it wasn't one of the easiest matches, but it seems Jenelyn kept saying that if she is defeated B, Ritu wouldn't be that Herculean a task for her. But Ritu has showed it to her that it's not an easy one to pull Ritu down, and definitely she's going to go back and review that match. She's going to learn from it. She's going to understand the gaps, and she's going to try and hone her skills accordingly. Talking about the fight again, right? In one of the rounds, we actually saw a headbutt. Would Ritu be okay to talk us through that headbutt? What happened in the circle? रितु वो बोल रही है कोई एक राउंड में आपका हेडबट दिखा, क्या आप हमको उसके बारे में बात करना चाहोगी? क्या? सॉरी, हेडबट
हेडबट बोल रहे हैं अपने, आई थिंक सर से उनको कुछ मारा क्या कुछ? नहीं, उसने मेरे को मतलब ग्राउंड में हाँ, यस 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 यस, आई रिमेम्बर। हाँ तो बोल रही है उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगी? बिल्कुल, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मतलब ये चीज अलाउड नहीं है। रियली मुझे नहीं पता था वो चीज, लेकिन जब रेफरी ने उस चीज के लिए मना किया तो फिर मैंने उस चीज को ध्यान रखा और आगे वो चीज नहीं की। She says she wasn't aware that it's not allowed. She wasn't aware of it, but the minute the referee instructed her against it, she did not pursue it any further. She did not try it again. She respected the referee's instruction. We saw in the last few seconds, in the fight, it was a pretty tough for her. She was in a very tight grip. What was she thinking at that point? Can she take us through what happened? What was in her mind, her strategy? तो बोल रही है जो लास्ट का राउंड था ना, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप में थे, करेक्ट? तो तभी आपका स्ट्रेटजी क्या था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि उसने भी आई थिंक बहुत कसकर आपको ग्रिप किया हुआ था, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था तभी लास्ट राउंड में? बिल्कुल, उस टाइम पे यही था कि मेरे को मतलब अपनी ग्रिप लाके और अपना कंट्रोल अच्छे से करके और मुझे स्कोर करना है, और मुझे मतलब वो उसके तो मैं उसको फिनिश करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने कंट्रोल करके और वो दिमाग में यही था कि मुझे स्कोर करना है और अपनी पोजीशन अपना अच्छा से साइड कंट्रोल करके वो चीज करनी है। Okay, she says that no, all that she knew that she had to regain her control. She has to reposition herself to become the dominant one, and yes, she wanted to finish it at the earliest, but she also realized it wasn't that easy, because even Oslin was resisting it, but somehow she got back into her most dominating position, and she took over the fight. She took over the round.